जी, तो आज हम आपको बेसिलिका सिस्टर्न जो कि अंडरग्राउंड है, आज उसकी सैर करवाएंगे। बेसिलिका सिस्टर्न को टर्किश ज़बान में येरेबतन सराय भी कहते हैं, जिसका मतलब है संकन पैलेस। Due to its geographical location that connects Europe with Asia, Istanbul city has been always an attractive place for many civilizations and empires through the time. Especially Byzantine Empire, which has built what was called a modern city full of facilities using sophisticated architectural and civil techniques. A lot of what was built and established during Byzantine period is still standing till the current day as a proof of how great this civilization was. And one of the most important proofs is the Basilica Cistern. It was built during the reign of Emperor Constantine in the 4th century, but greatly enlarged by Justinian in 537 AD and used as water storage for the Great Palace during Byzantine times and also for the Topkapi Palace under the Ottomans. There are hundreds of ancient cisterns hidden underneath the streets and houses of Istanbul. Out of all of these, only two are open to the public. The entrance to the Basilica Cistern is across the street from the Hagia Sophia. It is 143 meters long and 65 meters wide. The roof is supported by 336 marble columns, mostly in Ionic or Corinthian styles, each measuring 9 meters in length. Spaced at 4-meter intervals, they are arranged in 12 rows of 28 columns each. The cistern could hold 80,000 cubic meters of water coming from the Agrikapi Water Distribution Center in the Belgrade Forest, 19 kilometers from the city. The water was transported to the city center through the 971-meter long Valens Aqueduct and the 11.54-meter long Baklova Aqueduct, which was built by Emperor Justinian I. The cistern was forgotten for centuries and only accidentally rediscovered by the Frenchman Peter Gailius in 1545. While searching Byzantine antiquities in the city, he noticed that people in the neighborhood not only got a hold of water by simply lowering buckets through holes in their basements, they also sometimes even caught fish this way. Petrus was able to enter this cistern somehow, passing from the basement floors of houses in the neighborhood. Today, and after 2000 years of many wars and earthquakes, the Basilica Cistern still stands strongly as proof of how Byzantine Empire served its people and what kind of solutions it introduced to the world. Once you enter the cistern, you'll be amazed by its size. Just imagine that the huge room you're walking between its columns, then that can fit for more than 200 people, was once filled with water. Like most sites in Istanbul, the cistern has an unusual history. It was originally known as the Basilica Cistern because it lay underneath the Stoa Basilica, one of the great squares on the first hill. It was designed to service the Great Palace and surrounding buildings. It was closed when the Byzantine emperors relocated from the Great Palace, forgotten by the city authorities some time before the conquest. It wasn't rediscovered until 1545. Even after Gailius's discovery, the Ottomans didn't treat the so called underground palace with the respect it deserved. It became a dumping ground for all sorts of junk as well as corpses.
The Basilica Cistern has been restored several times since its original creation. The first repairs were carried out in the 18th century during the reign of the Ottoman Sultan Ahmed III in 1723. The second major repair was completed during the 19th century under the reign of Sultan Abdul Hamid II. Cracks in the masonry and damaged columns were repaired in 1968, with additional restoration in 1985 by the Istanbul Metropolitan Museum. During the 1985 restoration, 50,000 tons of mud were removed from the cistern and platforms were erected to replace the boats previously used for touring the cistern. Make sure you walk all the way to the far left-hand corner of the cistern to see the two Medusa heads. Both heads are casually used as column bases, one positioned upside down, the other tilted to the side. The origin of the two heads is unknown, though it is thought that they were brought to the cistern after being removed from a building of the late Roman period. Tradition has it that the blocks are oriented sideways and inverted in order to negate the power. In Greek mythology, Medusa was a female monster with snakes for hair, and anyone that looked into her eyes was instantly turned to stone. The most notable examples of reused materials are the two columns with gorgon heads and the so-called peacock-eyed or teardrop column. This peacock-eyed column is similar to the column fragments from the Forum of Theodosius. Also, a similar gorgon head now at the Istanbul Archaeological Museum was found at the Forum of Constantine, which suggests the two gorgon heads of the Basilica Cistern might also originally decorated the Forum of Constantine. जब आप स्क्वायर में ऊपर होते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि इस सड़क इस रोड के नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है और ऊपर से ट्राम गुज़र रही है और इतनी ट्रैफिक और सब कुछ और नीचे एक पूरा अलहदा से एक शहर बसा हुआ है। अक्ल दंग रह जाती है कि हज़ारों साल पुरानी चीज़ें अभी तक कितनी खूबसूरती के साथ कायम दायम हैं और किस तरीके से ये सब काम किया होगा, कैसे बनाया होगा उस ज़माने में, तो आप सोचते रह जाते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है और आप सुल्तान अहमद के एरिया में आए हुए हैं तो आप एक दिन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसा कि आप एक दिन में आया सोफिया देख सकते हैं, ब्लू मॉस्क देख सकते हैं, ग्रैंड बाज़ार का चक्कर लगा सकते हैं, और अगर आप बहुत अर्ली दिन का स्टार्ट करते हैं तो आप पहले टॉपकापी पैलेस देखें और उसमें कई घंटे आपको लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप आया सोफिया देखिए, ब्लू मॉस्क देखिए, और आया सोफिया के बिल्कुल करीब ये सिस्टर्न है, बेसिलिका सिस्टर्न, आप ये देखिए। इसके बाद आप ग्रैंड बाज़ार जा सकते हैं और वहाँ पे अच्छा सा खाना खा सकते हैं। सिस्टर्न के अंदर बहुत खूबसूरती से लाइटिंग का सिस्टम उन्होंने सेट किया हुआ था और मुख्तलिफ रंग बदलती थी लाइट्स, कभी ऑरेंज, कभी रेड, कभी ग्रीन। उसकी वजह से एक बहुत मैजिकल सा महसूस होता था, लगता था पता नहीं हम किस दौर में चले गए हैं। और फिर हमने अपना टूर ख़त्म किया सिस्टर्न का, वापस सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर गए और उसके बाद हमने सोचा कि अब खाना खाया जाए और फिर हम ग्रैंड बाज़ार चले गए ताकि हम वहाँ पे नुसरत रेस्टोरेंट है ग्रैंड बाज़ार के अंदर, जहाँ से हमने सोचा कि कबाब वगैरह खाए जाए। ग्रैंड बाज़ार एंटर होने के लिए मुख्तलिफ़ एंट्रेंसेस है, मुख्तलिफ़ तर्ज के दरवाज़े बने हुए हैं और आप जब एंटर होते हैं तो बिल्कुल भूल भुलैया
अगर फ़ोन पे आपके जीपीएस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसी रास्ते से वापस आना है। अदरवाइज़ आप किसी और रास्ते से भी निकल कर जा सकते हैं। Grand Bazaar is one of the oldest and largest covered markets in the world. There are more than 4,000 shops. It is located in the Sultan Ahmed area, walking distance from the Blue Mosque, Spice Bazaar, and Hagia Sophia. The total area of the market is 45,000 square meters and 20,000 people work inside. The origins of the Grand Bazaar go back to the time of Mehmed II, when in 1455 the old bazaar was built near his palace. You can find jewelry shops, decoration pieces, Turkish delights, pottery, carpet shops, gold and diamond jewelry, and clothing as well. The bazaar's centuries old history can still be seen from the countless frescoes on the many ceiling arches and ancient columns. However, the main charm lies in its chaotic organization. Every turn is full of unexpected surprises. No shopping is complete without bargaining. Bargaining is must. Try to keep cash if possible. ग्रैंड बाज़ार विंडो शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है और अगर आपने कोई ख़रीदारी करनी है तो याद रखिएगा कि हर चीज़ की कीमत 10 गुना ज़्यादा बताई जाती है, तो आपने बारगेनिंग कर दी है, नहीं तो आप छोड़ के चल पड़ें और ख़ुद ब खुद फिर दुकानदार आपको आवाज़ देंगे। अदरवाइज़ बेशुमार दुकानें हैं और पहली दुकान से चीज़ मत उठाइए, बिकॉज़ उसकी कीमत अगर 500 एक जगह है तो कहीं से आपको वो 100 रुपये या 200 की भी मिल सकती है। सो मेक श्योर कि बारगेनिंग ज़रूर करें अगर आपने वहाँ से चीज़ें ख़रीदनी है, अदरवाइज़ इट्स गुड फॉर विंडो शॉपिंग एज़ वेल। अगर आपने फॉरेन करेंसी चेंज करवानी है, डॉलर्स या पाउंड्स या कुछ और, तो ग्रैंड बाज़ार में जो मनी चेंजर्स हैं वो आपको सबसे बेस्ट रेट देते हैं और बेशुमार मनी चेंजर्स हैं, तो इसलिए आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो बेस्ट प्राइस दे आप उसी से पैसे चेंज करवा सकते हैं। शॉपिंग के लिए कैश रखें, जिधर भी आप जाएं इस्तांबुल में किसी भी बाज़ार में अगर आपके पास कैश होता है तो प्राइस में काफ़ी आपको मार्जिन मिल जाता है। वो चीज़ कई दफ़ा आपको आधी कीमत पे भी मिल जाती है अगर आपके पास कैश हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड देंगे तो फिर वो नेगोशिएशन कम होती है, लेकिन हमेशा आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से तमाम 2-4 दुकानें देखें अगर आपने कोई चीज़ लेनी है। ये नहीं कि किसी हर दुकान से चीज़ उठाते जाएं। सो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज़ कई दफ़ा आपको 200 की चीज़ 2000 में भी वो लोग चार्ज करते हैं। वैसे तो पूरे इस्तांबुल में ही गोश्त की क्वालिटी टर्की में बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही उम्दा। और नुसरत रेस्टोरेंट वालों का ये है कि उनकी जो मीट की क्वालिटी है वो अमेजिंग है, बिल्कुल जैसे गोश्त मुंह में डाले और मेल्ट हो जाता है। तो वहाँ की स्टेक्स और मीट की जो ज़्यादातर सारी मीट की ही चीज़ें हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप ऑर्डर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने का। बेसिकली ये रेस्टोरेंट जो है ये कार्निवोर्स के लिए है, जिनको जो गोश्तखोर लोग हैं, वेजिटेरियंस के लिए नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो मीट की होती हैं। कैसा है? Very delicious food. Good? Yeah, good meat. Good meat. Ibrahim, how's the food? And this is my plate. और यूँ हमारे एक बहुत ही अच्छे दिन का इख्तिताम हुआ और वापसी पर हम ट्रैम लेकर
घर की तरफ चल पड़े।